में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे देवी माँ तव चरणन में, हे देवी माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ। माँ प्रकाश सम सूर्य चंद्रमा, माँ ही ज्ञान भंडार। माँ प्रकाश सम सूर्य चंद्रमा, माँ ही ज्ञान भंडार। माँ की कृपा से होता उजाला, माँ की कृपा से होता उजाला, मिटे अज्ञान अंधार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ। माही सागर माही कश्ती, माही खेवनहार। माही सागर माही कश्ती, माही खेवनहार। चरण पकड़ कर माँ के प्राणी, चरण पकड़ कर माँ के प्राणी भव से उतरे पार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ। माँ ही हमारी निर्मल माता, आदि शक्ति अवतार। माँ ही हमारी निर्मल माता, आदि शक्ति अवतार। इनकी कृपा पा जाए जो प्राणी, इनकी कृपा पा जाए जो प्राणी, उसकी मौज बहार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे देवी माँ तव चरणन में, हे देवी माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। हे निर्मल माँ तव चरणन में नमन है बारंबार। नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय श्री माता जी। எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி
தியானத்துக்கு உட்காருவோம். நல்லா கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்து இரண்டு கைகள் மடி மீது வைக்கலாம். ஒரு சின்ன குழந்தை போல பிரசன்ன சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்க்கலாம். நுண்ணுதர்கள் வழியாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் இணைப்பை அமைத்துக் கொள்வோம். இரண்டு கைகளிலிருந்து நுண்ணுதல் வரதான் உணர்வோம். மனதார மிக பணிவோட பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் எங்களுக்கு நிர்விசார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக குண்டலினி எழுப்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய இரண்டு கைகளும் இரண்டு சகசிராரமும் கைகளில் உள்ள சகசிராரம் ஒன்று கீழே ஒன்று பேரலா வந்து நிதானமா ஒவ்வொரு சக்கரங்களா பந்தன் குண்டலினி எழுப்போம். அதுக்கப்புறம் மெதுவாக பந்தன் போட்டுக்கொண்டால் நுண்ணதர்களை கண்டிப்பா நம்மளால மாற்றத்தை உணர முடியும். வேக வேகமா பண்ணாம நிதானமா பண்ணலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டேன். நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் வைத்து மிக மரியாதையோட கூறலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. கை மடக்கி கொண்டு வரலாம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குளுமையான நுண்ணதர்கள் உணர்வுமான் கவனிப்போம். இப்போ மெதுவாக 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறுவோம். கவனம் முழுவதும் சகசாரத்திலேயே வைத்து மகாமந்திரம் கூறினால் நாடிகளும் சுத்திகரியும், நுண்ணறிவுகளில் மாற்றம் தெரியும். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நுண்ணதிர்களில் மாற்றம் தெரியாதான் உணர்வோம். மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் நம்மளுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே வைப்போம். ஸ்ரீ பூமி மாதா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் மடிக்கி கொண்டு வருவோம். மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களை நிகழ்காலத்தில் முழுமையாக நிறுத்திவிடுங்கள் தாயே.
நான் இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் ஏதும் இல்லை தாயே. இந்த சரீரமும் இல்லை. இரண்டு உள்ளங்கையில என்ன உணர்வு வருதுன்னு கவனிப்போம். மெதுவாக நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய லெஃப்ட் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய ஞானமும் தூய விருப்பமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைவதே தூய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளோட லெஃப்ட் உள்ளங்கையில நுண்ணதுரைகள் வரதான் உணர்வோம். இப்போ மெதுவாக ரைட் ஹேண்ட் மடிக்கு கொண்டு வருவோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய லிவருக்கு மேல வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திர தேவதா. தயவு செய்து எங்களுடைய சித்தத்தை சாந்தமாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய தூய்மையான சித்தத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனம் எப்பொழுதும் தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. நிர்மல் சித்தா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ரைட் ஹேண்டின் நுண்ணுதர்களில் மாற்றம் தெரியறதான் கவனிப்போம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கு கொண்டு வருவோம். ரைட் ஹேண்ட் நம்முடைய லெஃப்ட் ஹிருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கோபம், பொறாமை, இந்த மாதிரி எல்லா
அவகுணங்களையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத தூய அன்போடு இருக்கிறேன் தாயே. ஸ்ரீ சிவபார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवपार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்முடைய சகசிராரத்தில் நுண்ணதுர்கள் வரதான் கவனிப்போம், கூடித்தான் கவனிப்போம். இப்போ நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் நம்மளோட நெத்தியில் வைத்து நம்ம கொஞ்சம் லேசா குனிஞ்சிக்கலாம். மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எங்களுடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களுடைய திருவடியில் வைக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா. எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருங்கள் தாயே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்களும் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களையும் மன்னியுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய சகசிராரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. தங்களிடம் ஒன்றினையை அமைத்து கொடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களுடைய அன்பு சக்தியை உணர செய்யுங்கள் தாயே. நிர்விசார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ரைட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வரலாம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய சகசாரமும் அதற்கு கொஞ்சம் மேல வைக்கலாம். நம்ம முழுமையாக ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட சரணடைவோம். எந்த சிந்தனையும் எந்த உணர்வும் வேண்டாம். தன்னால ஸ்ரீ மாதாஜியோட அருள் குளுமையான நுண்ணுதல்கள் வழியாக உணர முடியும். நம்மளுடைய கவனமும் நம்மளுடைய சகசாரமும்
நம்முடைய நடு ஹிருதயம் வைத்து ஸ்ரீ தேவி கவச்சை கூறுவோம். ஓம் अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यः गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्था शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् नाशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैनृत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्धिन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपौलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी
कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कद्गयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रुं गुदे महिषवाहिनी कटयां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्द्रंष्ट्राकराली च केशां चैवोद्भकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस्यां स्थित्यमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुर्रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपतान् रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्या कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेष्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवे राजस् तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं
तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। முழு கவனம் சஹஸ்ராரமும் அதற்கு கொஞ்சம் மேலே வைத்து சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய 2 கைகளில் நுண்ணதிர்களை உணர்வோம். நம்ம இந்த சரீரம் இல்லை, அதனால சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு அங்கேருந்து நம்மளுடைய 2 கைகளையும் நுண்ணதிர்களை உணர்ந்து தியான நிலைக்கு போவோம். இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம், உள்வாங்கிப்போம். As you know, the Mahalakshmi principle lies within all of you in the center. And once you are fed up with the falsehood and also with the hypocrisy of people, you start seeking the truth within. That's how a new category of people are born, who are called as seekers, sadhakas. They are very different from others. They don't care for any material gain or any power, position. They want to seek the truth. And this category is the one you are. And that's why you have come to Sahajya. This comes from your past lives also. For many people, I think it's their past life which has brought the seeking in them. Also the affluence through which you have gone, you got fed up with it and you are seeking the truth. So now, first of all, to understand Mahalakshmi principle, we must know that we have 2 other channels into which we can jump. One is the left, another is the right. And it depends on what sort of a background you had in this life
because of your background in last life, you have come to the right path. But last life is being covered by this life, the surroundings, the country in which you are born, your friends, parents, the society in which you lived has dominated you in so many ways that the Mahalakshmi principle doesn't express itself in that full power. We should really suck in everything else and put you onto the throne of a Sahaja Yogi. Now, for a Sahaja Yogi to keep his Mahalakshmi principle all right, has to always introspect, not to look at others, but to introspect. What am I doing? Am I in the left side or on the right side? Which side am I going? What side I am following? Am I in the center? Now, how will you judge? The best is to feel your vibrations. Feel your vibrations. But sometimes you go so far to the left or to the right that you just do not feel vibrations, your Mahalakshmi principle is not working. Then you go on. It's like a complete derailment, I should say, a kind of a slope on which you just go on falling onto that. So all these conditionings we should watch out in ourselves and in others. How we have got these problems that we slip out from the central path. Imagine a train is going on a proper railway track and suddenly it starts moving this way or that way. So where will it end up? Into destruction. But you have a way of arranging that this derailment can be brought back to the middle path. So in a very detached way, if you look at yourself like a witness and see for yourself, not about others. Even when I give lectures, people start saying, oh, mother is saying about somebody else. No, I'm saying about you, yourself. So you watch out that are you in the center or are you going to the left or to the right? First of all, those who are in the center should not have any physical problems, should be able to completely cure themselves. If not others, they should be able to cure themselves. Secondly, a person who is in the center is a very peaceful person. He is never angry. He might put up a show that you are angry, but he doesn't get involved into anger or any emotions whatsoever. He just watches and he can act. He can act to be in that feeling of temper, or so lust, greed, anything, but just to act, because sometimes this acting is needed, so he can use it. But you should be sure, first of all, that you are completely detached. So first of all, before acting, you must become a master of acting. And for that, you have to become yourself. If you become yourself, then you are a master and you can see where are you going. Now, the difference between a Sahaja Yogi and a Sahaja Yogi who is like this, as you say, is this, that he is capable of going to the left or to the right. They are not solidly Sahaja Yogis. And they go on like this and there is no progress. Imagine any aeroplane which is wobbling like that will be on the ground only. Nobody will be able to put it up. In the air, because God knows when will it fall down. So for any machinery, we have to fix it up properly first before we start working it out. So to fix up our
Mahalakshmi principle, you have to see that your physical being is all right, is normal, no problem. I'm not meaning the modern ways of looking at health, but that you should feel healthy and happy. You should feel that there's no problem with your physical being. But if you are a complaining type, I'm here paining, I'm paining there, then there's something wrong with you. This is the first criteria that you are in the center. Then your attention should be more towards nature, how the nature is, how it is blossoming, how it is working out. It should be towards the sky, stars and things, just to enjoy all the creation that is around, just to enjoy it. That's an enjoyment which is really so surprisingly deep. When you see something beautiful, scene or something, you go to a very beautiful place, then a kind of a joy that pours in you from your sahasrara, that also you must experience. Also you must experience your thoughtless awareness. That is, when you look at something beautiful, you should suddenly become thoughtless. Just start seeing it. The whole joy will start pouring on you. All of you can know yourself very well because now you are quite sensitive and you have your own centers enlightened by Mahalakshmi principle. The Kundalini has definitely enlightened your Mahalakshmi principle. So you can always make out what my chakras are, how are they catching, where are they catching. Instead of avoiding that, you just work it out. What's the problem? Where is the problem? Once you work it out, then you'll be surprised that as soon as your desire goes inward, the Kundalini itself will gush through and she will cleanse your chakras. As I was telling you, we do not know our powers. Only one thing you have to do is to desire. You have to desire that let my vibrations be all right, let my chakras be cleared out, let me be in the center, in the balance. Just you have to desire. I mean, it's such a simple thing to desire, but that also we cannot do. Our desires are something else, not what we have to be. Just you have to desire that let me be a clean Sahajogi, let me be a solid Sahajogi. There are mediocres who can never be. I'm not talking about them. But so many can be very high up, can be very high up in Sahajoga. But their desires are not yet being fully manifested. That is a damping effect of so many things I have told you about. So, if supposing you have to catch the plane, then you don't get down on the way somewhere and stay out. In the same way, when your Kundalini has to rise, you can see everything that's happening, but keep yourself aloof because you have to reach your point, and that is through this Mahalakshmi principle. It nourishes our brain, our intellect, everything it nourishes. This Mahalakshmi principle, above all, it is the balancing. It balances. If you are overdoing something, then it gives you a kind of a push. If you are not doing anything, again, it works in such a manner that it balances you. So, this is the guiding factor for you, this Mahalakshmi principle, which works out. Everything you can say that is balancing, the equilibrium, and the wisdom. As the light of Mahalakshmi principle starts, the wisdom dawns upon you. But the greatest of all is the love. Love for God, love for truth. And you thrive on that love. Just you are there. So this Mahalakshmi principle is to be preserved and has to be always watched and looked into.
And the blessings of Mahalakshmi are so many that I tell you, I cannot even tell them in one lecture. I'll have to give at least 10 lectures. But you yourself know what are the blessings of this Mahalakshmi principle is. The greatest is the complete self-contentedness. Absolutely self-content. You don't want to grab something, you don't want to run after something. It's just self-content. You don't want any publicity, you don't want any comfort, nothing. You are comfortable in your spirit. This is the greatest blessing of this Mahalakshmi principle. And if that is so, then why not we look after our Mahalakshmi principle and forget about the rest. Last of all, when it enters into your brain, then the Virata is manifesting and you become collective. Absolutely collective. Such a beautiful thing is to be collective. There was a girl who went to Sicily and she was in a restaurant eating something alone, and then she looked at somebody else and that girl also looked at her, and this one got up and came to her and she said, they were not bearing badges. They said, have you been to Sri Mataji? Yes. Have you been? Yes. We are Sahajogis? Yes. And then they just embraced each other with such joy. In a far-fetched place somewhere in Sicily, in some restaurant, imagine. They just got lost. The feeling of oneness, the brotherhood, the friendship is so great and so joyous. You don't then consider from what country you are, from where do you come, what is the color of your skin, or what is the religion you had followed, what your parents are. You just enjoy meeting people. This friendship, this joy comes from the same Mahalakshmi principle when she enlightens your Sahasrara. In the Sahasrara you get this feeling of the whole. And the feeling of the whole is something so great. Individualism people talk, but it is against the principle of whole. Who do not know the whole, you see, talk of individualism. This individualism, which has worked all kinds of dangers for us now, we have to know that we are one with the whole. Of course we are individuals in the sense that we have different faces, different clothes, different living, different relationships, but we belong to the whole. And this Virata's feeling that we are part and parcel of the whole gives you complete peace and complete protection. You never feel that something can happen to you. No. Some accident will take place, all right, will take place, but nothing will happen to me. I am a surgeon. So many people have gained like this by allowing themselves to be completely looked after by this Mahalakshmi principle. Just surrender to the Mahalakshmi principle means that you give up your ego and you give up your conditionings. You give up both the things. Just surrendering to your Mahalakshmi principle. That's why Mahalakshmi is so important. May God bless you all. நம்மளுடைய முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனையை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களுடைய கணேச தத்துவத்தை எங்களுக்குள் முழுமையாக நிலைநிறுத்தி எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் தூய்மையாக வைத்து அமைதியும் திருப்தியும் தந்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் நிரப்பி அந்த அன்பை எல்லோரிடமும் பகிரவும் பரிமாறவும் எங்களை ஒரு உத்தமமான ஒரு கருவியாக தாங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த பிரார்த்தனையை தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.